Hello, Civil Service aspirants. I welcome you to the platform of StudyIQ. पिलामाने तुमको StudyIQ प्लेटफॉर्म को स्वागत करुछि। StudyIQ तरफरु आमर यूट्यूब सीरीज चलछि जोठी कि मु सीरीज ऑफ इंग्लिश एसे डिस्कशन करुछि। आईएएस परीक्षा रे आगरु जो 2024 मसिया रे जो एसे पढिछि सेथरु दीटा एसे ऑलरेडी मु डिस्कशन कर सारछि ए सीरीज रे। ओएस गत वर्षर अर्थात 2022 मसीहार फास्ट क्वेश्चन टा मु ऑलरेडी डिस्कशन कर सारछि। एबे डिस्कशन करूछि गत वर्ष ओएस परीक्षा रे अर्थात 2022 ओपीएससी रे पडिथिबा क्वेश्चन नंबर 2 पिला माने क्वेश्चन नंबर 2 एनवायरनमेंट रिलेटेड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एटा बहुत इंपोर्टेंट एसे कारण आईएएस परीक्षा रे एवं ओएस परीक्षा रे एनवायरनमेंट रिलेटेड एसे प्राय प्रत्येक वर्ष पडुछि। तेनो ए एसेटा को एनवायरनमेंट रिलेटेड एसेटा को मु आज डिटेल डिस्कशन कर दउछि एवं आरो फ्रेमवर्क बनै देछि। आंसर केमिति लेखा हबो लेखि भी देछि। ए मेकानिज्म बा ए मेथड को फॉलो करके तमे जदि लेखिबो परीक्षा रे बहुत भलो मार्क रहिबो। पिला माने 2022 मसिहा रे क्वेश्चन पडिथला जे क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड and strategies for mitigation and adaptation। तेनो आगे एठी लेखिबो क्लाइमेट चेंज कहिले आमे कोन बुझुचंती फ्रेमवर्क हबो। क्लाइमेट चेंज कहिले आमे कोन बुझुचंती कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज काहे के क्लाइमेट चेंज होची बा फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर क्लाइमेट चेंज को फैक्टर लगी सारा पृथ्वी रे क्लाइमेट चेंज होची आज का दिन रे। तापरे आमे कौन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करिसंती क्लाइमेट चेंज स्पीड रे न होआ पई कौन प्रिवेंटिव मेजर आमे नउचंती। अडाप्टेशन अर्थ जेते बळे प्रॉब्लम होची ताकू ओवरकम करिया पई कौन आमे स्टेप नउचंती। ए सब पॉइंट गुडी को आ भीतर रहिबो। पिला माने मु कहिची इंग्लिश एसे जेतोळे लेखिबो इंग्लिश एसे रे तीनटा कंपोनेंट रहिबो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन टाकू गोटे पोएम रे लिखि पारिबो गोटे कोटेशन रे लिखि पारिबो बा गोटे शॉर्ट स्टोरी माध्यम रे लिखि पारिबो। आ मोर स्ट्रेटजी हला मु सब बळे इंट्रोडक्शन टाकू गोटे शॉर्ट स्टोरी माध्यम रे लिखे कारण स्टोरी टा समस्त को पढिया पई इंटरेस्टिंग लागे सेति पई गोटे शॉर्ट स्टोरी माध्यम रे मु क्लाइमेट चेंज आउ चैलेंजेस ए दिटा को मु बुझेइची शॉर्ट स्टोरी माध्यम रे तार मिटिगेशन अडैप्टेशन कथा भी से शॉर्ट स्टोरी रे कहिची। देखो ये शॉर्ट स्टोरी टा क्लाइमेट चेंज को नहीं कि मु करिछि कौन से शॉर्ट स्टोरी अच्छी। देख इन द स्मॉल विलेज ऑफ सुंदरपुर देयर stood a majestic mango tree by the side of a river. It had been there for generations, providing shades to farmers, homes to birds, and the sweetest mangoes to the children. The villagers believed the tree was a gift from nature, protecting them from scorching summer heat. But over the years, it बुझेछि climate change होछि बोली। Over the years, the seasons changed, summer grew hotter, rains became unpredictable, and river dried up. One day, the trees in the village withered and died, all except the old mango tree. One day, a young girl named Rosie noticed cracks in the tree barks. गच्छर बकଳରେ ସବୁ ଦାଗ ଦେଖିଲା। The elders whispered, if the tree dies, Sundarpur will have no shade, no rain, no life. ए कथा एल्डर माने सब कथाबार्ता हेले वयस्क लोक माने। Rosie refused to accept this fate. She gathered her friends and said, if we plant more trees and save water, maybe we can save our village too. ए कथा रोजी कहिला। तापरे the children began planting saplings. Sapling माने चारा गछ। Built rainwater pits. रेनवाटर पिट कहले जोटा माटी खोलिकी स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे वर्षा हेले पानी गुड़ा डायरेक्ट पड़ेब
भितर को and convinced their families to reduce waste and use less plastic. Slowly, the river started to fill again. The air became cooler, and the mangoes and the mango tree stood strong once more, its branches heavy with golden fruits. Years later, when Rosie became the village sarpanch, she smiled as children played under the same mango tree. जोठी सी दिने खेलुथिला छोट बड़े रोजी सेठी एबे छोट पिला सब खेलुछंती. The lesson was clear. कौन lesson? Nature protects those who protect it. Nature protects those who protect it. पिला माने एठी आसी गला क्लाइमेट चेंज तो लिखि देला. एठी कहूची नेचर प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट. एठी आसला मिटिगेशन. ओके तापर कहूची द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज begins with small action because even a single tree can change the world. Even a single tree can change the whole world. तापर एठी मु लिखिछि क्लाइमेट चेंज कहिले आमे कोन बुझंती. क्लाइमेट चेंज refers to long-term shift in temperature, weather pattern and atmospheric condition largely driven by human activities like burning fossil fuels, deforestation and industrial pollution. Climate change कहले ए जिंस को हमें बुझुछंती. तापर मु कहिछि कजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज काहे कि क्लाइमेट चेंज होउची. ग्रीन हाउस गैस एमिशन होउची. ग्रीन हाउस गैस कोन मु लिखि देइछि. कार्बन डाइऑक्साइड कोठु आसुची, मिथेन कोठु आसुची, नाइट्रस ऑक्साइड कोठु आसुची याकु पढिबो. कार्बन डाइऑक्साइड from burning fossil fuels like coal, oil, gas, methane from agriculture and livestock, nitrous oxide from fertilizer and industrial process. Deforestation लगे क्लाइमेट चेंज होची. डिफॉरेस्टेशन माने हमें जंगल को हानि पकोचन काहे कि हम चंदी रास्ता एक्सपांड होची, नेशनल हाईवे रेल ट्रैक एक्सपांड करा होची, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होची, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन होची, माइनिंग होची, ए सब लगी डिफॉरेस्टेशन होची. Deforestation हेले कौन forest absorbs carbon dioxide but large scale deforestation increases carbon level. Industrialization, urbanization. Industrialization कहले कौन the process by which industries are established in different parts of the world. Urbanization कहले कौन the process by which more and more number of towns are established and a large number of people migrate from rural area and got settled in urban area. से प्रोसेस ना होची अर्बनाइजेशन जो थरे कि अर्बन पॉपुलेशन रो प्रोपोर्शन बढ़ुची. तापर नेक्स्ट होची अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर. दे अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहले कोन होची आमे हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर दोचंती, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड जोटा केमिकल को यूज करी करा हिची ताकू यूज करूचंती. सेटा भी कोन करची सेटा ऑन सेना प्रोडक्शन अधिका आसुची किंतु सेटा अनसस्टेनेबल. सेटा क्लाइमेट ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पकोची. तारे वेस्ट जनरेशन होची. एगुडा सब हैला तमरा कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. तापरे आछि चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड. क्लाइमेट चेंज रो चैलेंजेस सब कोन. फर्स्ट कोची राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर. देखा हैची 19th सेंचुरी रु आजि भितरे अर्थ रो एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री बढ़ी गलानी. सेथि पई हीट वेव आसुची, ड्राउट आसुची, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न आसुची. तार मेल्टिंग ग्लेशियर एंड राइजिंग सी लेवल. ग्लेशियर सब पोलार रीजन रे आइस कैप ग्लेशियर एगुडा सब मेल्ट करूची. तेनु आधरे होची कोन सी लेवलटा राइज करी जाउची. तापर लो लाइन कोस्टल सिटीज लाइक मुंबई, जाकार्ता, न्यूयॉर्क आर एट द रिस्क ऑफ सबमर्शन. बुड़िया अवस्था को माने पळै गलेनी. एक्सट्रीम वेदर इवेंट कौन एथरे होची क्लाइमेट चेंज लगी एक्सट्रीम वेदर आसी. फ्रीक्वेंट हरिकेन्स, साइक्लोन, वाइल्ड फायर्स एंड फ्लड्स हैव इंक्रीज्ड. एग्जांपल एठे देइची. तापर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स गला. थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. मेनी स्पेसीज फेस extinction as their habitat disappear. Coral reefs, a major marine ecosystem, are dying due to ocean acidification. Ocean ro acidification हो जाउची.
फूड एंड वाटर स्कार्सिटी तापर कौन होची हेल्थ रिस्क फूड एंड वाटर स्कार्सिटी रे कौन होची ड्राउट्स एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल reduce crop yields threatening food security melting glacier and erratic monsoon affect freshwater availability health risk रे कौन आसुची air pollution and heat waves cause respiratory diseases strokes and cardiovascular issues तार vector borne diseases like malaria dengue are spreading due to warmer climate तापर इकोनॉमिक लॉसेस नेचुरल डिजास्टर destroys infrastructure homes and livelihood developing nations bear the highest cost struggling with limited resources तापर आउ गोटे जिनस आसुची क्लाइमेट रिफ्यूजीज एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट देख आम रिफ्यूजी जानते जो युद्ध हुए जो देश से देश किसी लोक पलि आसती कि जो गृह युद्ध हुए सेठू भी पलि आसती किंतु बर्तमान पृथ्वीर बड़ चैलेंज है क्लाइमेट रिफ्यूजी आगु को आहरी बड़ चैलेंज है उभा हम कौन राइजिंग सी लेवल एंड ड्राउट्स फोर्स मिलियंस टू माइग्रेट लीडिंग टू क्लाइमेट रिफ्यूजीज रिसोर्स स्कार्सिटी कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर एंड फूड तापर स्ट्रैटेजी फॉर मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन केमिति क्लाइमेट चेंज को हमें बंद करवा कमई दबा दैट इज मिटिगेशन आउ अडाप्टेशन होची क्लाइमेट चेंज हेले आमे सब नुआ मेकानिज्म कौन अडॉप्ट करचंती जो थर कि आमे बंची परिबा तिष्ठी परिबा से कथा मु कहूची तेनो आगे हला मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज मिटिगेशन अर्थ रिड्यूसिंग कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी आजिका दिन में सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी लाइक सोलार एनर्जी विंड एनर्जी हाइड्रो पावर टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल कंट्रीज लाइक नॉर्वे आइसलैंड ऑलरेडी रिलाय ऑन ओवर 70% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेकंड कहूँ एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन केमिति कंजर्व करिबा एनर्जी एफिशिएंसी केमिति बढ़ेइबा इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंट एप्लायंसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड स्मार्ट ग्रिड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज इन होम एंड इंडस्ट्रीज थर्ड पॉइंट है रिफरेस्ट्रेशन एंड आफ्रेस्ट्रेशन पिला माने रिफरेस्ट्रेशन अर्थ जोठी जंगल थिला हटि जाइछि अर्थात आम काटी पकईचन से पुणी नुआ जंगल से तैयारी करवा सेठी आगुरु थिला सेठी ताको हला रिफरेस्ट्रेशन आफ्रेस्ट्रेशन माने जोठी आगुरु नथिला आमे नुआ करिक जंगल तैयारी कले दैट इज आफ्रेस्ट्रेशन तो से कोचे लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर तापरे एटा एग्जांपल देछि इंडियास ग्रीन इंडिया मिशन एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आमे डेवलप करिबा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर माने आमे केमिकल यूज करिबा नाही फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर यूज करिबानी कंपोस्ट करिबा केमिकल हर्बिसाइड पेस्टिसाइड जर्मिसाइड न करके नीम प्रोडक्ट यूज करिया नीम गछर प्रोडक्ट से गुडा सब तापर रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एमिशन इंडस्ट्री जो हाई एमिशन सब होची कार्बन ताकू कमेइबा क्लीन टेक्नोलॉजी आमे इंडस्ट्री रे इंट्रोड्यूस करिबा तापरे वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लास्टिक रिडक्शन आमे करिबा वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लास्टिक रिडक्शन आ माध्यम रे भी आमे मिटिगेशन करछन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को तापरे लास्ट होची ग्लोबल कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट पॉलिसीज पिला माने क्लाइमेट चेंज सारा पृथ्वी के अफेक्ट करछि एटा गोटे देश खाली चाहिए हबनी सबु देश भितर परस्पर संगे क्लाइमेट चेंज को केमिति मिटिगेट करा जिवो सेथि पई तांको भितर कोऑपरेशन रहिबा दरकार अडाप्टेशन तापरे आस अडाप्टेशन स्ट्रेटजी मु कहली प्रिपेयरिंग फॉर क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट सेटा को हमें कहउछन अडाप्टेशन जहा क्लाइमेट चेंज रो कुप्रभाव खराब प्रभाव पड़ुची आमे पृथ्वी पृष्ठ रे बंचिबार अछि तेनु हमको अडाप्टेबिलिटी बढ़ाइबार अछि सेटा से कहूँ फास्ट है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पिला माने 1999 बेलू तुम जन्म होता कि ना मुझे जानी बहुत पिला जन्म ही नथिबो
सेतेबेले आमर साइक्लोन आसिले किछि आमे आगुरु जानि पारु नथिले आजिका दिन रे कोन होउची साइक्लोन आसिले तार बहुत दिन आगुरु आमे जानि पारुचंती मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जानि पारुची एटा आ द्वारा आमे प्रिपेयर्ड ही जाउचंती इवैक्यूएट कर दोचंती डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम strengthen early warning for cyclone flood and wildfire build climate resilient infrastructure to withstand natural disaster तापर water conservation and management construct rain water harvesting system and efficient irrigation technique desalination plants for conserving sea water into drink converting desalination माने लुणिया पानीटा पळेकी मधुर पानी आसीबो desalination plants for converting sea water into drinking water urban climate resilience cities should adopt green building eco friendly transport and flood proofing नेदरलैंड रे सब जिनस होची तापर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जे गोटे लोक गोटे कार रे न जाई कि चार जण लोक गोटे कार रे जिबे बा मेट्रो सिस्टम रे मेट्रो रे जिबे बस रे जिबे ट्रेन रे जिबे से गुडा सब करिया दरकार कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन एटा सबुठो बेसी दरकार आउ रोल काहर कार अछि थरे गवर्नमेंट रो रोल अछि इंडस्ट्री रो रोल अछि इंडिविजुअल मानकर रोल अछि क्लाइमेट चेंज टाकू रोक करिया पे गवर्नमेंट रो लीड रोल गवर्नमेंट नबा दरकार एनफोर्स स्ट्रिक्ट एमिशन लॉज and penalties for polluters, fund research for clean energy and climate resilient technologies. तापर कहूँ industries must adopt sustainable practice. Corporation must reduce carbon footprints and invest in green project. Promote eco-friendly manufacturing and packaging. Individuals must act responsibly. Reduce energy and water consumption at home. Switch to plant-based diets, reusable product and sustainable travel, participate in climate activism and demand policy changes. एगुड़ा सब सिटीजन माने एक्टिवली ये सब थरे पार्टिसिपेट करिबा दरकार तापरे हमें कंक्लूजन को पढिबा पिला माने कंक्लूजन टाकू गोटे ऑप्टिमिस्टिक वे रे लिखिबो एवं मु कहिछि मोर स्ट्रेटजी हला कंक्लूजन को सब बळे मु पोएम हिसाब रे तुमको लिखिया पई कहिछि एठी देखो मु ऑलरेडी लिखि देछि क्लाइमेट चेंज इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ह्यूमैनिटी फेसेस टुडे हाउएवर थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन innovation and individual action we can mitigate its negative effect and build a sustainable future. The choice we make today will determine the world we leave for future generation, a thriving planet or a broken earth. The time to act is now. वर्तमान एक काम हमको करिवार अछि मु कहिथिली क्लाइमेट को नहीं कि आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं क्लाइमेट चेंज को नहीं कि मु गोटे कोटेशन भी देइथिली गांधी कोटेशन आवर प्लानेट अर्थ इज हैविंग सफिशिएंट रिसोर्सेस टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल बट आवर प्लानेट अर्थ इज टू मच लिमिटेड टू सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ ए सिंगल पर्सन कहिथिली बा आउ गोटे कथा कहिथिली क्लाइमेट चेंज तो होची एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोक लगेया पई एथिकल रिस्पांसिबिलिटी कथा मु कहिथिली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट रे सेठरे भी तमे कंक्लूड करि परिबो इट इज आवर केमिति करिवो जदि करिवो लिखिवो इट इज आवर मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू हैंड ओवर द प्लैनेट अर्थ टू आवर सक्सेसर्स exactly in the same condition in which we had borrowed it or we exactly in the same condition in which we had received it from our ancestor पिला माने ancestor को पाखरु आमे जेमिति पृथ्वी पाइथिले आमर आगामी वंशधर को सेमितिया पृथ्वीटे दबा आमर नैतिक दायित्व देई परिबा सेमितिया पृथ्वी आमे आमर ancestor मानक पाखरु गोटे पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड पाइथिले किंतु आमे जो वर्ल्ड दबा आमर आगामी वंशधर को सेटा गोटे पोल्यूटेड वर्ल्ड आमे दबा सेथरे भी कंक्लूड करि परिबो लास्ट को से पोएम लिखिबो इट इज वर्दी इट लिखिबो इट इज वर्दी टू मेंशन
about a poem, it is worthy to conclude the essay with a poem. A poem टा लिखि देबो कोन ऑलरेडी मु लिखि देइछि the rivers fade and forest die, a warming earth, a darkening sky, but hope still shines so bright and true in every change that starts with you. Plant a tree, conserve the light, walk the path that is fair and right. That is fair and right. Together strong, let's stand and say. Together strong, let stand and say. We will heal the world in every. We will heal the world in every way. एमती ये करिकी कंक्लूड कर दबो. दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ राइटिंग इंग्लिश एसे. ओएस परीक्षा रे गत वर्ष जहाँ एसे पड़ीथिला से थ्रू फास्ट और सेकंड एसे मु डिस्कशन कर देली यूट्यूब सीरीज रे. ता संगे आईएएस परीक्षा रे गत वर्ष अर्थात 2024 मसीह रे जो एसे पढ़ीथिला 8टा एसे पढ़ीथिला से थ्रू 2टा एसे डिस्कशन कर देली. मॉडल आंसर भी दे देली. ता संगे 2023 रे आईएएस परीक्षा रे भी जो एसे पढ़ीथिला गोटे एसे ता थ्रू डिस्कशन करिछि. कौन से एसेटा ना इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी springs from the effort of seeing magical in mundane. This is all about the strategy of writing essay. पिला माने एई अप्रोच टाको जदि फॉलो करिवो एसे एमतिया लिखिवो निश्चित भलो मार्क रहिवो. आउ जदि तमे स्टडी आईक्यू संगे किसी कनेक्टेड हवा पई चाहुच एई वीडियो रो शेष रे जोठी मेसेज लिखिया पई स्पेस थाए सेठी गोटे लिंक अछि. से लिंक की क्लिक कले स्टडी आईक्यू विषय सब कथा जना पड़िबो. जदि भी तमे चाहुच फोन रे कथा हा पई सेठी भी फोन नंबर अछि. so that you can directly get connected with the StudyIQ team. Okay, thank you for watching this video.